the biggest buyers for any product manufactured in India. Like defense, you can imagine कितनी चीज़ें वो procure करते हैं. Every day in a newspaper you will find a tender floated by Ministry of Defense. Then railways. Railways is a very big buyer. Then Department of Telecom, DGSND, all public sector undertakings. आज की तारीख में भी the biggest market for an SSI unit is government departments. So they are the buyers. So what we do is we organize the buyer-seller meets wherein we call the representatives of Government of India departments. They come there. For example, railways will come. They will tell the suppliers that we want this product with these specifications. So वहाँ पे क्या होता है कि buyer और seller की 1-to-1 meetings होती हैं और there on the desk itself it is decided कि कौन क्या product supply करेगा. क्योंकि ऐसा नहीं है कि रेलवेज़ के पास भी सप्लायर्स बहुत हैं. रेलवेज़ के पास भी कई बारी सप्लायर्स की शॉर्टेज हो जाती है. दे आर ऑल्सो नॉट फ्लडेड विद सप्लायर्स. अगर सप्लायर के पास बायर नहीं है तो बायर के पास भी सप्लायर नहीं है. तो उन दोनों की इस कमी को पूरा करने के लिए वी ऑर्गेनाइज बायर सेलर मीट्स. Both in and outside the country. NSIC is a very important organization of this ministry for implementing various developmental schemes for the micro, small and medium enterprises. Single point registration scheme for government purchases. Under this scheme, MSEs registered with NSIC get purchase preference in government purchase program, exemption from payment of earnest money, issue of tender sets free of cost, waiver. These are the benefits we have talked about. Of security deposit and issue of competency certificate. The benefits that I got from NSIC as an entrepreneur are tremendous. Especially the competency certificate really gives me an edge over my competition. Consortia and tender marketing. NSIC forms consortia of units manufacturing the same products, thereby easing out marketing problems of MSMEs by exploring the market and securing orders of bulk quantities. NSIC distributes it to MSMEs in tune with their production capacity. Raw material distribution. NSIC supports MSMEs by procuring and supplying raw materials like steel, aluminium and copper, etc. NSIC procures raw material from bulk producers and distributes the same in requisite small quantities to MSMEs, ensuring timely delivery, thus playing a role of a catalyst agency. Exhibitions and technology fairs. To showcase competencies of Indian MSMEs and to capture market opportunities, NSIC participates in select international and national exhibitions and sector-specific fairs. NSIC also organizes TechMart, International Technology Fair, a forum where technology seekers and providers meet, discuss and conclude agreements. MSMEs also get a platform to demonstrate their manufacturing strengths and latest technologies and synergize and collaborate in their respective fields. To give further impetus to marketing of MSMEs products and technologies, NSIC is embarking on an ambitious project of marketing development cum business park and exhibition center for small enterprises. Buyers. आप में से कितने लोगों ने इसकी ज़रूरत नहीं, आवाज़ आ रही है पीछे? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर देखा है? ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं देखा. इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जब लगता है 14 से 27 नवंबर, उसमें हॉल नंबर 14 जो है वहाँ पे हर साल वो पूरा हॉल जो है NSIC अपने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए सेटअप करती है और वहाँ पे जितने भी यूनिट्स आते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वाले वो वहाँ पे अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं एवरी ईयर. एंड इट इज़ नोन बाय द नेम टेक मार्ट, टेक्नोलॉजी मार्केट. Seller meets. Bulk and departmental buyers like railways, defense and large companies are invited to participate in buyer-seller meets
to enrich MSME's knowledge regarding terms and conditions, quality standards required by the buyer. Export facilitation. NSIC is a recognized export house and exports products and projects of MSMEs to other countries. The major areas of export are handicrafts, leather items, hand tools, pipe fittings, builders' hardware, and supply of small industry projects on turnkey basis. It also facilitates insurance of their export credit under the Export Credit Insurance Scheme for MSMEs. Credit support. Adequate. What do you mean by credit support? Finances, borrowings. किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे पहले तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है. अब मार्केटिंग तो हो गई, अब बात हम करेंगे पैसे की कि NSIC की क्रेडिट फैसिलिटेशन के लिए क्या स्कीम्स हैं. Finance for an enterprise is quintessential for its success. To meet credit needs of MSMEs under Bank Credit Facilitation Scheme, NSIC has tie-up arrangements with major commercial banks for providing. We have got a tie-up with 12 banks to facilitate credit to small industries. These banks include nationalized banks as well as private banks. तो अगर आपकी पैसे की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए हो, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए हो, चाहे आपकी वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स और बैलेंस शीट नहीं मांगी मैंने. वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स क्या क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस. वर्किंग कैपिटल किस किस चीज के लिए चाहिए होता है? डे टू डे ऑपरेशंस. डे टू डे ऑपरेशंस में क्या क्या आएगा? परचेज ऑफ स्टॉक्स. सबसे ज़्यादा किसी भी इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट है वर्किंग कैपिटल का 60% तो स्टॉक्स का ही होता है. और डेटर्स के लिए वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा यार? डेटर्स के लिए वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा? बैंक से वर्किंग कैपिटल चाहिए तो आपको एक तो स्टॉक्स के लिए चाहिए, आपको अपना बिजली पानी का बिल भरना है उसके लिए पैसे चाहिए, आपको अपनी लेबर की पेमेंट करनी है वो चाहिए, बाकी डे टू डे एक्सपेंसेस. तो रॉ मटेरियल को छोड़कर बाकी आपकी कोई भी फंड रिक्वायरमेंट हो दैट NSIC विल गेट इट फुलफिल्ड थ्रू बैंक, क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए NSIC खुद अपने पैसे देती है, क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एन इंडस्ट्री और उसमें मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. 60% to 70% इज रॉ मटेरियल कॉस्ट. दैट फंडिंग इज डन बाय NSIC ऑन इट्स ओन. अगर इसके अलावा आपकी कोई भी पैसे की रिक्वायरमेंट है दैट NSIC विल गेट इट फुलफिल्ड थ्रू बैंक्स. Term loan and working capital facilities, pre-shipment credit, post-shipment credit, and for purchase of equipments as per the convenience of MSMEs. NSIC also assists them in technology upgradation. Finance for procurement of raw material. NSIC provides financial assistance for procurement of raw materials up to 90 days, both indigenous and imported. Performance and credit rating scheme. Performance and credit rating scheme. This is one of our subsidy based scheme. इसमें आपके यूनिट की परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट वर्दीनेस रेट करी जाती है और उसमें आपके जो भी एक्सपेंडिचर होता है अप टू 75% इज रिइंबर्स्ड टू एन SSI यूनिट. रेटिंग एजेंसी किसी का नाम सुना है कभी आपने? हैव यू सीन दोज शेयर्स एंड डिवेंचर्स जब मार्केट में निकलते हैं तो उनके ऊपर रेटिंग रहती है AA+, AAA+. अभी S&P ने अमेरिका की रेटिंग कम करके पूरा रिसेशन को रेसअप किया है. तो इस तरह जैसे S&P इज अ रेटिंग एजेंसी. हैव यू हर्ड ऑफ एनी अदर रेटिंग एजेंसी? इट इज नॉट क्राइसिल, इट इज क्रिसिल और ICR इज इकरा.
correct. ICRA, ICRA. So we have kept all major rating agencies on our panel, which includes CRISIL on ICRA, Duns and Bradstreet, then Samera, which is floated by SIDBI, then ICRA, Fitch, CARE, all are on our panel. आप अपने यूनिट की रेटिंग किसी भी रेटिंग एजेंसी से करा सकते हैं और जो भी उनकी रेटिंग फीस होगी उसका 75% आपको सब्सिडी के तौर पे दिया जाएगा. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडी इन दिस स्कीम इज दैट यू डोंट हैव टू कम टू NSIC फॉर रिम्बर्समेंट. You just have to pay the 25% to the rating agency. The balance 75% rating agency will claim from NSIC after assigning the rating to you. ठीक है? An innovative mechanism for accelerating the pace of credit. The NSIC Performance and Credit Rating Scheme has been launched by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. It provides an independent third-party opinion on capabilities and creditworthiness of small enterprises. This scheme is a major milestone for the growth of the Indian small enterprises sector and has changed the scenario of credit availability to MSEs and exposed them to world markets. All major credit rating agencies are empaneled, and MSEs are free to choose any empaneled rating agency. So I think one of the most innovative schemes which NSIC has launched is this performance and credit rating. In fact, they give a subsidy of up to 40,000 rupees to small scale industries in a bid to incentivize them to come forward and get themselves rated on the scheme. Intermediary services. Intermediary services is to provide information support. Information support के लिए we have got intermediary services. इसके लिए we have developed two web portals. One is www.nsic.co.in and the second one is www.nsicindia.com. जो nsic.co.in है उस पर तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की NSIC की जितनी भी स्कीम्स हैं along with their application forms is available. और जो nsicindia.com है that is our what you say it is similar to that eBay है ना online shopping वाले, it is somewhat similar to that. उसमें अगर if you want to purchase something from an SSI unit you can post your requirement. If you are an SSI unit and you want to sell your product, it is available there. Recognizing the importance of credit, the NSIC Performance and Credit Rating Scheme has been launched by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. It provides an independent third-party opinion on capabilities and creditworthiness of small enterprises. This scheme is a major milestone for the growth of the Indian small enterprises sector and has changed the scenario of credit availability to MSEs and exposed them to world markets. All major credit rating agencies are empaneled, and MSEs are free to choose any empaneled rating agency. So I think one of the most innovative schemes which NSIC has launched is this performance and credit rating. In fact, they give a subsidy of up to 40,000 rupees to small scale industries in a bid to incentivize them to come forward and get themselves rated on the scheme. Intermediary services. Information plays a vital role in the success of business. Recognizing the importance of information and its relevance to MSMEs, NSIC, through its web portal www.nsic.co.in, disseminates information on business and trade, tender notices, technology sources, spare capacity in SSIs, and used machinery, etc. International cooperation. Then it is international cooperation. इसमें क्या होता है कि we get various orders through ministries, various ministries, especially Ministry of Foreign Affairs, Ministry of External Affairs जो है वहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे साउथ अफ्रीका है तो वो क्या करते हैं कि दे वांट टू रेप्लिकेट द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्सरसाइज इन इंडिया in their country.
So they give the order to ministry for setting up vocational training centers or these institutes, ITIs and engineering colleges. That order is passed on to those by those ministries to NSIC, and we implement those business models at their country. This is international cooperation. NSIC plays a role of a crystallizing agency, sharing its experience of almost 6 decades with other countries under its international cooperation program. It helps other countries in establishing a policy framework for promotion and development of MSMEs. It also facilitates enterprise-to-enterprise cooperation, technology transfer, other forms of sustainable collaboration through exchange of business and technology missions with various developed and developing countries. NSIC has signed memorandums of understanding with 22 countries for sharing of best practices and also forging mutual alliance in the areas of joint ventures, investments, technical training, technology transfers, and also development of entrepreneurship in various countries. NSIC has developed a web portal which gives information about Indian MSMEs and also foreign MSMEs, and this will again help them to improve the trade and the trade opportunities. Training cum Incubation Center. What do you mean by an incubator? Have you heard of this word before, incubator? Yes. Okay. When a premature baby is born, it is kept in an incubator, wherein the complete life support is provided from outside. That is the same concept we are working on. We have got a technology incubator center, wherein we have kept around 30 live projects working, wherein any unemployed youth can come, take a training of 3 months. During those 3 months, each and everything which is required to set up that or run that unit is provided to him. We even do the hand holding process after the training is finished, and he or she goes back and starts its venture. That is our incubator. NSIC fosters MSMEs development by helping unemployed aspiring entrepreneurs in selection of projects for manufacture and incubation with a hand-holding approach. This includes identification of project, guidance on manufacturing process coupled with technology development and business development, hands-on training on machinery, preparation of project proposal, and assistance in credit facility, among others, all under one roof. Technology support. Technology is the key to enhancing a company's competitive advantage. NSIC, with its technical service centers, imparts technical training from conventional trades to high technology for skill upgradation, providing material testing facilities through accredited laboratories, machining and workshop facilities, and by providing product design. NSIC also emphasizes on sustainable business relations for MSMEs through export of technologies, upgradation, and exchange of business delegations. NSIC software technology. This is our software technology park. We have got 2 software technology parks in India. One is at Delhi, Okhla, and another one is at Chennai, wherein we provide the complete infrastructure to any SSI unit who is into manufacturing of software. दूसरी बात यह है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का जो एरिया होता है वहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को एंट्री की परमिशन नहीं होती है. आप कहीं पे भी कोई भी काम करेंगे तो कभी आपको सेल टैक्स वाले आके तंग करेंगे, कभी एक्साइज वाले आ जाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो हैं वहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की एंट्री अलाउड नहीं है विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट्स और विदाउट प्रायर परमिशन. तो ये 2 हमने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप किए हैं जहाँ पे कि स्मॉल इंडस्ट्री जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है अपना आराम से काम कर सके और वहाँ पे उसको कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रोवाइड किया जाता है, वेदर दे आर लीज लाइंस, वेदर इट इज़ पावर बैकअप, बिल्डिंग, एवरीथिंग. Up 100% EOUs for software export. They also act as a nodal point to activate software exports directly through NSIC. The facilities include built-in space, uninterrupted power, high-speed data link, conference rooms and business centers. NSIC has been doing an excellent job in assisting and promoting the micro and small-scale enterprises. Standing on the edge of a new global era, the National Small Industries Corporation is committed to raise the bar of Indian MSMEs against challenges beyond boundaries and above the exceptional, strengthening nation's economy, harnessing new opportunities, creating more employment, growing bigger. National Small Industries Corporation, making a big difference. So, आज के बाद आप ये मत बोलना कि एनएसएससी का नाम सुना है बट ये नहीं मालूम कि वो करती क्या है. ठीक है, आपके कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. एनी क्लैरिफिकेशंस, एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो अबाउट स्मॉल इंडस्ट्री और एनएसआईसी और एनी अनदर क्वेश्चन. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अब फाइनल ईयर में आप आ गए हैं, कंप्लीट होने के बाद अपना काम शुरू करना चाहेंगे, और कितने बाकी? हाँ जी, आफ्टर 5 इयर्स जॉब करनी है 5 साल. ओके, क्यों? या मैंने भी यही सोचा था. 14 साल हो गए नौकरी करते करते. और किसी ने कुछ नहीं करना? आपने? जी, क्या करना चाहते हैं आप? आपके जितने अब तो एमएसएमई जो है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ ऐसे जो सर्विस इंडस्ट्री में है, दे आर ऑल्सो साइन दैट सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग एन एसएसआई. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका फैमिली बिजनेस है? हाथ खड़ा करें जरा.